अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग इन गरीब लोगों के लिए मैगी नूडल्स बना रहे हैं। लेकिन अगर मैगी नूडल्स अलग से ही बनाए तो बहुत ही मज़े का रहता है, लेकिन उसमें अगर अंडा भुर्जी ऐड करेंगे, अंडा भुर्जी बना के बहुत ही मज़े का रहेगा। चलिए देखते हैं आसानी से हम लोग एग मैगी नूडल्स कैसे बनाते हैं। पानी अच्छी तरह गर्म होते ही हम लोग इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। मैगी पैकेट्स ऐड करे बाद हम लोग इसमें जो मैगी के साथ मसाला आया था उसी मसाला इसमें ऐड करेंगे। मैगी का प्रोसेस होते ही हम लोग इसमें एग भुर्जी बनाएंगे। उसके लिए पहले हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ऑनियंस भी ऐड करेंगे।
ऑनियंस ऐड करते ही हम लोग इसमें इमीडिएटली सॉल्ट भी ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा सा पकते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह भुने के बाद हम लोग इसमें टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर भी ऐड करेंगे। ऑनियंस सारे मसालों में अच्छी तरह पके के बाद इसमें हम लोग ग्रीन पीस भी ऐड करेंगे। फाइनली हम लोग इसमें जो पहले ही एग मिक्सचर प्रिपेयर करके रखे थे वो ही इसमें ऐड करेंगे। अंडा भुर्जी परफेक्टली बन गया है, लेकिन इसको और भी मज़ेदार करने के लिए हम लोग इसमें चिकन मसाला भी ऐड करेंगे। इसी अंडा भुर्जी को हम लोग मैगी में ऐड करेंगे। एग मैगी परफेक्टली बन गया है, लेकिन इसको हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे।
लॉकडाउन की वजह से जो भी परेशान है आपके आसपास, उन सभी को आपसे जितना हो सके उतना मदद करते रहिए। और हमारे ज़रिए कुछ ना कुछ इन तक पहुंचाने के लिए आप लोग 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए और हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं www.nawabskitchen.org। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।